हेलो एवरीवन। ओवरहेड कॉस्टिंग की इस लास्ट स्टेज में हमने डिस्कस क्या करना है। व्हाट इज द पॉइंट टू बी डिस्कस टुडे इज द ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स. So on this platform of College Dekho Learn, myself Deepak Gupta, what we have discussed till date, that how the indirect costs commonly known as overheads. So how the indirect costs associated with the production of a product are added to the prime cost of the product on a predetermined basis. And we were focusing primarily on the factory overheads, because if we break the funda on factory overheads, then on the similar lines we can add office overheads and the selling and distribution overheads. So how the factory indirect cost, the factory overheads are added on a predetermined basis to the prime cost, that what have been the focus on our journey on this College Dekho platform till now. So what we did, that we always anticipated how much will be the overheads, and we used the word budgeted overheads, and when we discuss in detail, we estimated these overheads not for the overall factory, because if we calculated the overheads for the whole factory and we estimated the predetermined rate for the whole factory, then we use the word blanket rate. So what we did, we classified the overheads on different departments and we calculated the departmental rate. So we should now presume that we are estimating, or we are having the budgeted overheads of each production department after fulfilling the requirements of identification of overheads, allocation, apportionment, and reapportionment. And how these steps are performed, that we have already discussed in our earlier sessions, for which you can log on to our channel on YouTube, College Dekho Learn, and see those videos. So we have those figure of budgeted overheads, and these budgeted overheads are divided by a predetermined basis, which can be generalized for the whole industry, that is traditional method, and which can be customized to the industry or to the organization itself. Then we use the word ABC, that is activity based costing. So these budgeted overheads were divided by any traditional method, unless on today we say that it was budgeted unit, that is we anticipated how much units we will produce. So we get this overhead absorption rate. So we planned, we anticipated, we budgeted how much overheads will be incurred over the coming period and how much units will be produced over that period, and based on that we estimated the overhead absorption rate. For example, the budgeted overheads were, say for example, rupees 5 lakhs for a particular department, and we anticipated that 50,000 units will be produced during that period. So the overhead absorption rate was rupees 10 per unit. So it implied that if a product is to be produced with a direct material cost of rupees 15, direct labor cost of rupees 5, then this rupees 20 will be the prime cost, and the factory overheads that will be added to this prime cost based on this overhead absorption rate will be rupees 10. So when we add this rupees 10, we say that the overheads have been absorbed at the rate rupees 10 per unit, and this rupees 30 will be known as the cost price, presuming there are no other overheads. And in this cost price we will add our desired margin. So if I say that the profit is at the rate 25% on selling price, so it means the selling price will be rupees 40 and the profit rupee will be rupees 10, and that is how we anticipate the selling price. But it does not undertake the fact that these are the budgeted overheads and these are the planned or the budgeted output.
it does not guarantee, it does not assure that the actual overheads that will be incurred after the period has been completed will be the same. That is, the actual overheads incurred may not be 5 lakhs. They may either be more than 5 lakhs, they may either be less than 5 lakhs, or they may be as planned, that is 5 lakhs. So these actual overheads, they may not, actual overheads incurred, they may not be equal to the budgeted overheads. Similarly, the budgeted output, जो आपने आउटपुट यहाँ प्लान करी 50,000 यूनिट, the budgeted output may not be equal to the actual output, that is the actual units that has been produced. तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गई और आपकी कैपेसिटी आपको सपोर्ट किया तो आउटपुट कैन बी मोर, और अगर डिमांड गिर गई वैसे वर्सा हो गया, डिमांड है ही नहीं इतनी, एंड आपकी जो इन्वेंट्री पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट मेकिंग कीपिंग टू मच इन्वेंट्री, so you may have to reduce your output, and hence you didn't produce as units as you planned for. So there can be a case where actual output is either more than the budget output or it is less than the actual output. So in both the circumstances, if these are the factors, then it may result that either the overheads which have been absorbed as per overhead absorption rate, these overhead absorbed as per the overhead absorption rate, they will not be equal to the actual overheads which have been incurred. Obviously they will not be equal, and how, I will just show you with an example. So you will have to first remember this thing, that these budgeted overheads and budgeted units, they have no role to play except to calculate the overhead absorption rate, which is used to calculate the overhead absorption rate, and which helps in determining how much overheads have been absorbed in the cost accounts. So these overheads absorbed will be actually equal to the overhead absorption rate multiplied by the actual output, and this overheads incurred, they are charged to financial accounts because they are always maintained after the period has been incurred, and they will be charged to cost accounts. They will be charged to cost accounts. And so if they are not equal, then their profits will not match, and there will be a need for reconciliation. There will be a need for reconciliation of profits. But if they are not equal, it means either the overheads absorbed are more than overheads incurred, or what can happen, that overheads absorbed are less than overheads incurred. So if the overheads absorbed, if the overheads absorbed are more than the overheads incurred, then we use the word overabsorption. Overabsorption of overheads. And if the overheads absorbed are less than the actual overheads incurred, then we use the word underabsorption of overheads. So we will first show with an example how
it this situation arises, how we can have a situation where there is either a under absorption or there is a over absorption. And if there is such a situation, then we have to also discuss how they are treated. So when there is situation of under and absorption, over absorption or under absorption, then how they is treated, how they have to remove this difference of over and under absorption. So we will first understand with the help of an example how it happens, and then we will study theoretically how this is to be removed. So if we carry on with the same example as we started, that in the given scenario we anticipated that the budgeted overheads were rupees 5 lakhs and the budgeted output was say 50,000 units. But when the actual period was completed, we realized that the actual overheads that were incurred were more than what we anticipated, that is 5,50,000, because the actual output also increased. There was a demand increase in the demand, and hence the output was increased and it was 52,000 units. So because of the increase in the demand, the more units were produced, which also caused increase in the overheads which have been incurred. So what is happening here, that based on this data, the budgeted overhead absorption rate, तो ये मैं प्लीज केस 1 बना रहा हूँ. तो यहाँ जो ओवर एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज 5 lakhs divided by 50,000, and that comes out to be rupees 10 per unit. And because we discussed that the overhead absorbed will be equal to overhead absorption rate multiplied by actual output. Therefore, rupees 10 multiplied by 52,000 units, that is 5,20,000, is the overheads absorbed. So there is a case here that overheads absorbed is 5,20,000 rupees, whereas the actual overheads that have been incurred are rupees 5,50,000. So here incurred are more and absorbed are less. So there is a case of under absorption. So it is a clear-cut case of under absorption, that is 5,20,000 overheads absorbed minus actual overheads incurred 5,50,000. So there is a under absorption of overheads to the extent of rupees 30,000. Under absorption of overheads to the extent of rupees 30,000. ठीक है. अगर मैं यहाँ केस 2 लूँ और उस सेम डाटा के साथ ये शो कर दूँ कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड हैं, दैट इज, यानी कि आउटपुट बढ़ने से ओवरहेड्स बढ़े, लेकिन जो ओवरहेड्स बढ़े वो 5 लाख से बढ़ के 5,10,000 हैं. तो इस केस में जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड हैं वो तो एज अबव 5,20,000 ही होंगे. तो हमारे ओवरहेड्स बढ़े, 5 लाख से बढ़ के 5,10,000 हुए क्योंकि हमारी आउटपुट बढ़ी. एंड ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ओवरहेड्स आर नॉट वेरिएबल इन करेक्टर. बट इफ वी प्रज्यूम कि पार्शियली द ओवरहेड्स वर वेरिएबल इन करेक्टर, सो व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेज द फिक्स करेक्टर ऑफ द ओवरहेड, जो उसमें से फिक्स करेक्टर के ओवरहेड्स है वो तो सेम रहे, लेकिन जो वेरिएबल करेक्टर के थे वो बढ़ गए.
तो अगर ये सिनेरियो ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, या ये हम मान के चलें कि पूरा ऊपर वाले केस एग्जाम्पल में वेरिएबल ज़्यादा थे इसलिए ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इस वाले केस में वेरिएबल कम थे फिक्स्ड ज़्यादा थे इसलिए ओवरहेड्स बढ़े लेकिन कम प्रोपोर्शन में बढ़े, तो उस केस के अंदर हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन का केस आ गया। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा पॉसिबल है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ओवरहेड्स कि वो कितने फिक्स करेक्टर के हैं कितने वेरिएबल करेक्टर के हैं। लेकिन यहाँ से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ओवरहेड्स फिक्स करेक्टर के ज़्यादा होंगे तो आउटपुट के बढ़ने से ओवर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल करेक्टर ज़्यादा होगा तो आउटपुट के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, एक्चुअल ओवर्स इनकर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उस केस पे अंडर एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये एक एंटिसिपेशन है, कोई जनरलाइज लॉ नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 5,20,000 है, इनकर्ड 5,10,000 है, और यहाँ पर हमारा ₹10,000 जो है वो ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया। ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, तो चाहे ओवर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है अंडर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांस। इट इज़ नॉट श्योर कि होगा क्या, बट कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द character of the overwords, whether they are variable, whether they are fixed, and but summarizingly I can say, if the overheads are more of variable character, then if the output increases then there are more chances of under absorption, and if the overheads are more of fixed character then there are more chances of over absorption, but that is just an observation, that is not any hard and fast rule. Thirdly, अगर ये ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया चाहे कुछ भी हुआ हो, तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन ये शो कर रहा है कि आपने कॉस्ट में ज़्यादा ऐड करा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्फ्लेटेड है। और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो वो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफ्लेटेड है, प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, आपने कम ऐड करी है। तो ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स में क्या होता है कि कई बार आउटपुट बढ़ जाती है कई बार आउटपुट गिर जाती है। तो कई बार नॉर्मली आउटपुट के बढ़ने से अगर हम ओवरहेड्स का करेक्टर्स एक जैसा लेके चलें, तो आउटपुट के बढ़ने से, या ये लेके चलें कि ओवरहेड्स प्राइमरली फिक्स करेक्टर के हैं, वेरिएबल कम है, जैसे कि हमारा केस 2 में हो रहा है, तो अगर किसी सीजन में आउटपुट ज़्यादा होगी तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और अगर किसी सीजन में आउटपुट कम होगी तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इट डिनोट्स कि एक पर्टिकुलर सीजन का ओवर एब्जॉर्प्शन अगले सीजन के अंडर एब्जॉर्प्शन से मैच हो जाएगा, तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन मैच होकर मोर और लेस फिगर आपके एंटिसिपेशंस के इक्वलेंट हो जाएंगी। सो व्हाट द समरी ऑफ द मैटर इज दैट अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो वो हर सीजन में अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्टमेंट नहीं करती, इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि वो बिलीव करके चलती हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर सीजनल वेरिएशंस जो हैं वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शंस को एडजस्ट कर लेंगे। But that is not a justifiable reason for all kind of industries. So if we believe that there are no major seasonal changes, then over and under absorption needs to be removed by having the concept of supplementary rate, by initiating the concept of supplementary rate. तो supplementary rate में क्या करते हैं हम लोग, जो भी amount of ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन है, अमाउंट ऑफ ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्प्शन, जो भी है अमाउंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, उसको एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ओवर एब्जॉर्प्शन 10,000 था और एक्चुअल आउटपुट 52,000 थी, और यहाँ पर पहले वाले केस में अंडर एब्जॉर्प्शन जो था वो 30,000 था और एक्चुअल आउटपुट जो है वो 52,000 था। तो जो भी ये रेट निकल कर आएगा, इस रेट से यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं, ओवरहेड कॉस्ट को कम कर देते हैं, और यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं।
और हमारा फोकस कॉस्ट अकाउंट्स में है, तो हम ये जो डाटा बता रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रेट से जो भी अमाउंट आएगी उसके बेसिस पर अपने कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर देते हैं, रिड्यूस या इंक्रीज कर देते हैं। अगर पहले ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, कॉस्ट ज़्यादा ऐड हुई हुई है तो उसे कम कर दीजिए, या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, कॉस्ट कम ऐड करी हुई है तो उसे बढ़ा लीजिए। और इस तरीके से हम लोग सप्लीमेंट्री रेट के बेसिस पर साल के एंड में या पीरियड के एंड में अपनी कॉस्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और एक तीसरा ऑप्शन भी है। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो व्हेन वी समराइज दैट हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन of overheads is performed, then we say the one option is that in case of seasonal employment, seasonal establishments, we ignore it as they will auto adjust. दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन की जो अमाउंट है वो बहुत माइनर है, माइनर अमाउंट है, बहुत मेजर अमाउंट नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बिकॉज एट ये जो अमाउंट है इतनी छोटी है कि उसका कॉस्ट पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों के दोनों जो हैं पहले वाले ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल इनका यूज़ पेपर में नहीं होता। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। तो आप सप्लीमेंट्री रेट की बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप सप्लीमेंट्री रेट को यूज़ करके अपने कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन when there is a topic of over and under absorption. So if you see that when we started our journey of overhead costing, we have to identify what actually are overheads. So this journey has to start what are actually overheads, what are actually overheads, and not just identify, you have to relate them with department or with the general factory. तो जब आप उन्हें राइज कर पाते हो कि वो किसी डिपार्टमेंट के हैं स्पेसिफिक या जनरल फैक्ट्री के हैं, देन यू आर एबल टू गिव देम, एलोकेट देम। तो अगर आपको पता लगता है कि वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हैं, देन यू एलोकेट देम टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। और अगर आपको लगता है कि वो जनरल फैक्ट्री के हैं, तब आप उन्हें अपोर्शन करते हैं, अपोर्शन to each department on a specific basis, किसी ना किसी specific basis को यूज करके आप उसे allocate कर देते हैं। जब आप ये apportionment कर लेते हैं तो वो overheads हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, irrespective of the fact कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट है। बट क्योंकि आउटपुट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आएगी, इसलिए आप रीअपोर्शन करते हैं, रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स में वापस लेकर आते हैं, जिससे कि सारे के सारे ओवरहेड्स जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। सो ये जो 3-4 स्टेप्स हैं ये कहलाता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। और विद द हेल्प ऑफ दिस ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी आप उस पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स की एक समराइज शीट बनाते हैं, और उस पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स को आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक लेकर आ जाते हैं, एंड नॉट जस्ट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। तो इस ओवर डिस्ट्रीब्यूशन समरी की बेसिस पर आप चाहें तो आप पूरी फैक्ट्री का कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं, यानी कि ब्लैंकेट रेट निकाल सकते हैं, और चाहो तो फैक्ट्री का कंबाइंड रेट ना निकाल के डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक रेट निकाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल रेट। और ये क्या निकालेंगे, ये हमारा 5वां स्टेप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट।
और उस एब्जॉर्प्शन रेट की बेसिस पर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और उस कॉस्ट के बाद कैलकुलेट करने के बाद आप देखते हो कि आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ। और अगर आपको लगता है कि ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, देन इट इज़ ओके, अदरवाइज आप उन्हें ट्रीट कर कर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरहेड्स की ख़त्म कर देते हैं। और इस पॉइंट के साथ हमें लगता है कि फॉर दिस फ्री यूट्यूब सेशन we have covered sufficient concept which will be helpful in your exam for this basic generalized knowledge. And for specific problem sessions and for any generalized problem, you can always raise the flag on this platform. We will be keeping in touch. And for more personal attention, you can always join on your platform, on our platform, and we will have live interactive sessions with you. And I hope we will be satisfying all your needs regarding any education problems on our platform. And on this note, myself Deepak Gupta signing off from this platform of College Dekho Learn. Thank you very much. Goodbye.